अच्छा, लाइट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइट चैप्टर के अकॉर्डिंगली लाइट की नेचर पता होनी चाहिए कि विच टाइप ऑफ wave actually light is it longitudinal or transverse? Because we discussed this topic in the chapter of properties of wave, and the movement of the light waves is perpendicular to the vibration of particles, right? Yes. So light is transverse in nature. So light Yes. waves are transverse wave. In nature. मतलब कि आपके पास लाइट की जो नेचर होगी कि विच टाइप ऑफ लाइट वेव एक्चुअली इज, किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ट्रांसवर्स नेचर होती है लाइट की, ट्रांसवर्स वेव। और नेक्स्ट अगर हम उसे डिस्कस करें तो क्या लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड होगा ट्रैवल करने के लिए, या विदाउट मीडियम भी लाइट ट्रैवल कर सकती है? Without medium. ठीक है, विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है क्योंकि ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप मीडियम को यूज करो ट्रैवल करने के लिए लाइट को। ओके, तो ये दो बेसिक पॉइंट हो गए लाइट की नेचर के अकॉर्डिंगली। और वेव के बारे में बेसिक डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट लाइट और waves are energy carriers. So in light, energy is also going to transfer from one place to another, which is light energy. And if we discuss about the speed of light, that what will be the speed of light, because we discussed about the speed of sound in previous chapter. So is it greater than the speed of sound or less than the speed of sound? Greater. Greater than the speed of sound. And what will be the value of speed of light? 10 to power 8 meter per second. So this is the value of speed of light. Yes. Because it requires no medium, so it can travel with the same speed in almost every medium. But if we discuss about some dense material and some rare materials, so speed will remain same, but light will deviate in different path. So we will discuss that concept also in this chapter. So speed of the Yes. light will remain same, and it can travel without any reference of medium, and it is transverse in nature, right? Yes. So this is the basic concept of chapter light. And if we move towards next point related to this chapter, so the first important topic in this chapter is law of reflection. Because when light rays are going to strike some material, so light rays will bounce back or reflect back from that surface. So we need to discuss about the law of reflection, right? And if we discuss about the Yes. law of reflection, so law of reflection means, let's suppose if there is a source of light and light is going to strike some solid material. Let's suppose there is a mirror or a plain smooth surface and a source of light or a ray of light is going to strike this medium at this point. So this ray, or the name to identify this ray, is known as the incident ray, क्योंकि ये फर्स्ट रे है जो आकर स्ट्राइक कर रही है सरफेस को, तो इसलिए हम इसे इंसिडेंट रे मेंशन करते हैं। और ये जो पर्पल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट करेगी। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
Now you need to identify the direction of reflection after light going to reflect from the surface. So what will be the direction of wave? Any idea? From a dense surface. ओके लेकिन अभी हम डेंस और रेयर को अगर एक साइड पर रखते हैं, अगर हम डेंस और रेयर को कंपेयर नहीं करते, तो हम इसकी किस एंगल पर लाइन ड्रॉ करें, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई Straight. कर सकते हैं? स्ट्रेट मींस पैरेलल. Yeah. ओके. इफ यू रिमेम्बर द टॉपिक ऑफ रिपल टैंक, तो रिपल टैंक में भी हमारे पास वेव्स की रिफ्लेक्शन थी, राइट? Yes. और हमने वहां डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? Yeah. तो हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होगी कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी होगी. सही है? तो आपके पास यहाँ पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना होगा आपको. ठीक है? Yes. So this will be your normal line. Now you can identify the angle of reflection after reflecting from the surface, right? Yeah. So if this angle is equals to angle of incidence, so what will be the angle of reflection after reflecting from the surface? Any idea? Um. ट्रिपल टैंक में भी हमने Go. डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सेम एंगल से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, राइट? Yeah. यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा आपका, that is going to be with the same angle. So the angle of reflection will also equals to the angle of incidence, right? Yes. So this is the basic law that angle of incidence will always equal to angle of reflection, and this law also valid for the ripple tank or the reflection of water waves. So the first important point in law of reflection is that angle of incidence will always equal to angle of reflection. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. And if you want to write this in scientific or in symbol form, the angle of incidence will be equal to angle of reflection, right? Yes. Okay, so this is the basic law of reflection that both angle will always equal. And if we further discuss about the number or the specific name of these ray, we already discussed for the first ray, which is known as incident ray, and the second one is normal. And what about this third one? Third one को आप किससे represent करोगे? This is known as reflected ray. तो ये थर्ड रे हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी रिफ्लेक्टेड रे को, राइट? Yes. तो ये तीन डिफरेंट टाइप की रेस हो गई हमारे पास एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमने देख लिया कि एंगल भी इक्वल होगा सेम वेव्स, वाटर वेव्स की तरह से. सर वो 500 वापस. तो यहाँ पर आपके पास लॉ में जो है वो मोशन सेम हो जाएगा. और उसके अलावा जो है, अगर आप फर्दर इसमें डिस्कस करते हो डायरेक्शंस को और रेस को, मेरा मोबाइल
तो इफ वी नेक्स्ट डिस्कस अबाउट सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में हमने एंगल को डिस्कस कर लिया। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स की रिफ्लेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो हमने प्लेन सरफेस डिस्कस किया ना। अब हर बार तो प्लेन सरफेस नहीं होगा। हमारी डेली लाइफ में हमारे पास रिफ्लेक्शन लाइट का होता है, हमारे रूम में रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से नहीं होता, हमारे पास डिफरेंट सरफेसेस से भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो अगर हम दो कैटेगरीज लिखें, तो एक आपके पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो आपके पास रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर होगा, राइट। yes, और अगर आपके पास रफ सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? या तो आप इररेगुलर लिख सकते हो, वरना उसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, राइट। yes, और स्पेसिफिक ये टर्म यूज की जा रही है हमारे पास यहाँ पर। रेगुलर इज फॉर द स्मूथ सरफेस एंड इररेगुलर और द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ऑन रफ सरफेस, राइट। yes, और अगर सरफेस रफ हो और रफ सरफेस पे अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो, तो आप किस तरह से करोगे? वहां पर भी आप सेम फिनोमिना अप्लाई करोगे। लेट सपोज अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी बात कर ले यहाँ पर। लेट सपोज इफ देयर इज irregular reflection or diffuse reflection, so diffuse reflection में हमारे पास हमें इरेगुलर सरफेस को कंसिडर करना है, और इरेगुलर सरफेस पे हमने देखना है कि रिफ्लेक्शन किस तरह से पॉसिबल है। और लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इरेगुलर सरफेस हो, दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास yes, इरेगुलर सरफेस आ गया। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई रे आकर स्ट्राइक करती है, तो हम उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हमने यहाँ पर देखना है। तो अगर लेट सपोज लाइट रे आकर आपके पास इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो अब आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि यहाँ तो इरेगुलर सरफेस है। um, और एक और रे अगर हम ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज वो इस डायरेक्शन में आकर स्ट्राइक करती है, तो इन दोनों के लिए हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना हो, अगर डायरेक्शन ड्रॉ करनी हो रे की, तो वो डायरेक्शन कहाँ पर होगी? देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमारे पास we need to first draw a normal line which is always perpendicular to the reflecting surface। तो मैं नॉर्मल के भी लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको वो चीज भी याद रहे कि नॉर्मल लाइन जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। So if you want to define normal, so normal is a line which is always perpendicular, which is always perpendicular to the surface। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल के लिए आपके पास वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के लिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और अगर अब हमें yes, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर डिफरेंट होगी। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन रही है, ठीक है। मतलब सरफेस का फेस इस एंड पर है, और यहाँ पर जो है वो सरफेस इस एंड पर है, राइट। yes, ओके।
और नेक्स्ट अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास यहाँ पर होगी बिल्कुल एट 90 डिग्रीज, राइट, और यहाँ पर होगी 90 डिग्रीज, राइट। तो ये दोनों की Yes. नॉर्मल आ गई। तो अब आप इजीली एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लोगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस Yes. and this is angle of reflection, and now you can easily draw, sorry, this is also angle of incidence for the second ray, and now we can easily draw our angle of reflection with the reference of first line, which is equal to the angle of incidence. So if we want to draw angle of reflection from this point, so angle of reflection will be also equal, and in this position angle of reflection will also equal to the angle of incidence. ये बहुत सिंपल सा रूल So है how is आपके it पास, equal? बिकॉज देयर इज अ सरफेस, राइट, और सरफेस Yeah. का आपने फेस चेक करना है कि वो फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि लॉ Oh, ऑफ okay. रिफ्लेक्शन तो सबके लिए सेम अप्लाई होगा, क्योंकि लाइट रे तो चेंज नहीं हुई, लाइट रे तो सेम है। तो यहाँ पर Yeah. आप परपेंडिकुलर और नॉर्मल जो है वो इंडिविजुअल सबके लिए ड्रॉ करोगे, वो जिस डायरेक्शन में भी अगर हिट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में नॉर्मल जो है वो आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही डिस्कस किया जाता है आपके एग्जाम्स में, राइट। Yes. सो फॉर नॉलेज आपको आइडिया होना चाहिए कि इफ देयर इज अ irregular shape or some rough surface, so you need to identify the direction of reflection after reflecting from that surface, right। और अब हम जब Yeah. रिफ्लेक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो जो हमारी रियल लाइफ में सबसे पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करते हैं वो है आपके पास प्लेन मिरर्स की, राइट। सो वी डिस्कस Yeah. अबाउट द प्लेन मिरर्स, and plane mirrors are also like a smooth surface, so there will be also a regular reflection, no diffuse reflection. So the angle of incidence will be always equal to the angle of reflection. And if you want to identify the nature of the image that is going to be formed in the mirror, that is very important. Let's suppose if there is a mirror, so this is the surface of our mirror, and we need to identify the image of an object which is placed right in front of it. So if object is placed in front of it and the shape of object or the letter, let's suppose if there is an object of like this shape, so this is our object which is placed in front of the mirror. So इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी आपके पास, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो इमेज किस तरह से होगी। Image mirror यस, में मिरर में इमेज कैसी बन रही होगी आपके पास, same आपने सेम बनेगी, mirrored सेम ओरिएंटेशन, mirrored. मिरर्ड होगी, ठीक है। और वो मिरर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, ऐसा ही होगा। Yeah. तो डायग्राम जो है वो फाइनल आपके पास कुछ इस तरह से शो होगी, right? So this will be the image of an object in the mirror, right? Yes. So ये हमारे पास इमेज आ गई, और इमेज आने के बाद अगर आप फर्दर डिस्कस करते हो इसको,
Or if we discuss about the nature of the image that is going to be formed in the plane mirrors, so plane mirrors में image की nature को अगर हमने identify करना हो, so the nature of image in plane mirrors, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी? virtual. वर्चुअल होगी। वर्चुअल और रियल में डिफरेंशिएट कर सकते हो? Yes. ओके, सो रियल इमेज कौन सी होगी और रियल इमेज कब फॉर्म होगी? Real image, the object. ऑब्जेक्ट रियल इमेज होगी। हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट रखना है। ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उस इमेज की बात कर रहे हैं, राइट? Yes. तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर है, उसकी इमेज की बात करें अगर हम, तो इसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी? Um, अच्छा, अब रियल और वर्चुअल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही है, क्योंकि रियल और वर्चुअल में हम कॉन्सेप्ट कुछ सब और समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वी डिस्कस अबाउट रियल इमेज, सो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है आपके पास कि रियल इमेज में आपके पास if we discuss about the real image, so the image of an object, the image of an object can be observed on the screen। जब आप स्क्रीन पर इमेज को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप उसे रियल इमेज कंसिडर करोगे, ठीक है? yes. और अगर हम वर्चुअल की डेफिनेशन लिखें तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है? अब ये स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? अब होता ये है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अभी रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है हमारे पास? मिरर, Um, ठीक है, क्योंकि मिरर ही हमारे पास एक सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। yes. और अब वहां पर अगर आप स्क्रीन रखते हो, लेट्स सपोज आपने मिरर की बैक साइड पर या उसकी फ्रंट साइड पर स्क्रीन को रखा, तो अगर आप बात करते हो कि आपके पास स्क्रीन कहाँ पर होगी, तो स्क्रीन को या तो आप बैक साइड पे रख सकते हो या आप जो है वो उसे फ्रंट साइड पे रख सकते हो, ठीक है? Yes. तो या तो मिरर की बैक साइड पे अगर आप स्क्रीन रखो तो लाइट तो क्रॉस नहीं कर सकती मिरर को, ऐसा ही है। Yes. तो इसका मतलब है अगर हम बैक साइड पे स्क्रीन रख दें तो उसका कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, Yes. और अगर इसकी बैक साइड पे रख दें यानी ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे रख दें हम, तो आपको उसका भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। Yeah. तो Yes. इसका मतलब ये कि हमारे पास स्क्रीन पर इमेज तो मिरर में कभी भी नहीं बन पाएगी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Yes. आपके पास इमेज हमेशा स्क्रीन में वर्चुअल बनेगी, सॉरी मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इमेज that cannot be formed or that cannot be obtained on the screen,
राइट। तो ये आपके पास दोनों में डिफरेंस हो गया। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जब आपके पास इमेज स्क्रीन पर नहीं आएगी तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। और इस कंडीशन में भी आपके पास इमेज वर्चुअल होगी, क्योंकि अगर हम स्क्रीन कहीं पर भी सेट कर लें आपके पास इमेज उस स्क्रीन पर नहीं नजर आएगी। इमेज हमेशा आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि हमारे पास यहाँ पे मिरर यूज कर रहे हैं, उस पे नजर आ रही होगी। राइट। यस। तो ये वर्चुअल का कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर हम इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें और पता चल रही है यहाँ पर, कि द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास ओरिएंटेशन चेंज होगी। ठीक है, अगर आप खुद को ऑब्जर्व करते हो मिरर में तो आपका राइट जो है वो लेफ्ट पे ऑब्जर्व कर रहे होते हो आप, और आपकी लेफ्ट को आप राइट पे ऑब्जर्व कर रहे होते हो। राइट। ठीक है। सो यस। इमेज इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड ऑल्सो, राइट। यस। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने लिखा कि इमेज वर्चुअल, सेकंड इन्वर्टेड, and if we discuss about the size of an image, so what will be the size of an image? Is it same or some different? सेम। Yes, same in size. So these are three important points for the image that is going to be formed in the plane mirror. So you always need to remember this. Clear? यस। और बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन इस तरह से होंगे आपके पास एग्जाम में, वो हम टॉपिकल सॉल्व करते हुए भी देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा हो और इमेज कहाँ पर बनेगी, तो उसमें ऑप्शन जो है वो मिरर की बैक साइड पे ड्रॉ किए हुए होते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। आप सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लो उसका, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर लो। ठीक है। यस। तो वो भी हम देख लेंगे कि किस तरह से वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये एंगल फर्दर एक्सटेंड होगा तो फर्दर एक्सटेंड होने के बाद आपको रिफ्लेक्शन ही शो करेगा। और अगर आप इसके सेंटर में नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो आपके पास दोनों एंगल आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। दिस विल आल्सो गिव यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and this is also equal to the angle of reflection, right? यस। So यस। if options are given on the other side of the mirror, so don't get confused that how image is going to be formed on the other side of mirror. That is just to check the law of reflection in that question, the concept of law of reflection, right? यस। So this is our concept of reflection in mirrors, or reflection of light from plane mirrors. और प्लेन मिरर्स की रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेव्स के लिए, जो हमने रिपल टैंक में भी डिस्कस की थी, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन, राइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस। And what is the basic purpose of, or what is the meaning of refraction? In simple words, we say that refraction means चेंज ऑफ yes, change चेंज of, in the direction. yes, change in the direction, or you can simply say that bending of light waves Yes. passing through any medium. So bending of light rays after passing through after passing through other medium. तो यहाँ पर हमारे पास सेम मीडियम का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा जो हमने डिस्कस किया था रिपल टैंक में, राइट? If you remember, we discussed about the shallow Yes. water, deep water,
तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर भी यूज करना है कि यहाँ पर भी आपके पास कुछ सरफेस डेंस होंगे, कुछ सरफेस रेयर होंगे, राइट? Yes. Okay, so if we discuss about some other concept in refraction, so basically there are two possibilities for refraction. The first one, that light may travel from rare to dense. That light is going to be travel from rare to dense medium, right? And the second Yes. one is light is going to travel from dense to rare. So let's suppose there are two types of different materials or different medium. One is the rare one, second one is the denser one. So rare की एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? Um. बहुत कॉमन एग्जांपल है। Plain प्लेन surface. प्लेन सरफेस नहीं, मीडियम की बात कर रहे हैं हम। मटेरियल कौन सा Light. होगा? लाइट को तो Uh. ट्रैवल करवाने हमने। अब नॉर्मल लाइफ में जब हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस वो किस मीडियम से बना है? एयर मीडियम, राइट? हमारे Yes. एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मीडियम है। और लेट्स सपोज अगर लाइट पास होती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, so which material is going to be rare and which material is going to be dense? Air is rare and glass is dense. Yes. So in first case, light is going to be travel from air to glass and then again from glass to air. So these are two types of refraction condition, that either light is going to travel from rare to dense or either it is go or travel from glass to air, right? Yes. And if you need to identify the bend in the direction of light ray or the actual direction after passing through it, so you again need to draw a normal line, right? Yes. So there is a normal line which is again perpendicular to the surface, and from dense to rare, again we need to draw a normal line. So this is our normal line, okay? Yes. And let's suppose light is going to travel in some direction with some angle there. Let's suppose in first situation, light is going to travel in this direction. So you can easily identify the angle of incidence there, right? Yes. This is our incident angle. And what is the name of this ray which is passing through the glass? Can you identify it? The green one. Angle of एंगल तो हमने मेंशन कर दिया, incidence. और इस रे Yes. को आप क्या मेंशन करोगे? इस रे के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। Normal. नहीं, वो भी ड्रॉ कर लिया। एक और थी, Angle of reflection. एंगल भी सीख लिया हमने। एंगल तो अभी हमने आइडेंटिफाई करना है। रे के बारे में आपने जो लिखना है कि वो जो रे हम ड्रॉ कर रहे हैं उस रे को हम किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे? इज इट इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल? reflected. रिफ्रैक्टेड। Reflected ray.
रिफ्रैक्टेड, और इंसिडेंट कहाँ जाएगी? तो इंसिडेंट रे कहाँ पर होगी आपके पास? इस पॉइंट पर। Yes. ये जो फर्स्ट रे अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम स्ट्राइक कर रही है ना, तो ये इंसिडेंट Yes. रे होगी। ठीक है, तो दिस इज Yes. इंसिडेंट रे। और जब ये पास होगी इस मीडियम से, तो अगर आपको याद हो, हमने ये भी डिस्कस किया था, जब डीप टू शैलो और शैलो टू डीप हम जाते हैं, तो आपके पास डायरेक्शंस कैसी होती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा वहां पर आइडिया हो कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, तो बेसिकली आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। Um, Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, कंफर्म? एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्टिंग वाला है ना? जी, बेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सेम शैलो डीप वाटर। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी सेम अप्लाई करना है। इज तो इट away गोइंग टू from टुवर्ड्स normal. नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं होगा। It's bending It's bending the light. towards, yes, this material, the glass material, it bends the light towards normal, right? Because glass Yes. is the denser one, and in the case of wave, the deep water is going to be the dense one. So it bends the light in the direction of normal, right? Yes. So this will be the angle of angle of refraction, and this particular ray means the refracted ray. So the second ray is known as refracted ray, because light is going to be bent from transparent material. Glass is transparent and mirror is opaque, so that's why light is going to reflect from mirror and light is going to bend through the glass, right? Yes. So in this situation, angle of incidence will be greater or less. So in this situation, angle of incidence will be greater than angle of refraction. Refraction. So आप इस पॉइंट के थ्रू भी याद कर सकते हो, वरना आप सेकंड पॉइंट भी याद कर सकते हो, that light ray will bend towards the normal, right? Yes. और ये कंडीशन सिर्फ आप तब अप्लाई करोगे जब लाइट पास होगी फ्रॉम रेयर टू डेंस मटेरियल, bends toward the normal. And if we consider the second situation, and in the second situation there is a dense material first, and light is going to travel from dense to rare material. So let's suppose if there is an angle of incidence at some point here. So this is the angle of incidence. So in this situation, light is going away from normal or towards normal? Away from the normal. Away from the normal, और जब आप away from the normal ड्रॉ करोगे तो angle of refraction जो है वो greater हो जाएगा angle of incidence से. Yes. So light is going to be somewhere in this position, and this angle will be known as angle of refraction. So in this situation, angle of refraction, or we can say that
angle of incidence is less than angle of refraction, right? Or in Yes. second term, we can say that light will bend away from normal. Light ray will bend away from the normal. Okay. So this Yes. is the situation that how light is going to be react when it passes from dense to rare or rare to dense material. So this is the situation और ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है. सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास रिपल टैंक में जो हम यूज करते थे, वही सेम फैक्ट्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं. कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके पास, सिर्फ आपके पास टर्म्स चेंज हो रही है. वहाँ डीप शैलो वाटर था और यहाँ पर आपके पास डेंस और रेयर मीडियम है, राइट? Yes. और अगर कोई लाइट स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसके लिए आप क्या पॉइंट लिखोगे? Straight. यस, अगर एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो वो बिना रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट चली जाएगी, राइट? Yes. और अगर फर्दर आप डिस्कस करते हो इसके बारे में तो आपको ये आइडिया होगा कि डिफरेंट मटेरियल्स का जो है वो डिफरेंट रिफ्रैक्शन वैल्यू या रिफ्रैक्शन पॉइंट होगा, राइट? मतलब ग्लास Yes. का रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगा, वाटर का रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगा, तो सबका रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू होगी, रिफ्रैक्शन रेशियो होगा, वो सबका डिफरेंट होगा, राइट? Yes. तो अगर हमने रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना हो तो आपने रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक डिफरेंट टर्म यूज करते हो. लेट सपोज आपके पास एक ग्लास है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी और हमने उसका एंगल जो है वो रिफ्रैक्शन रेट कैलकुलेट करना है, राइट? Yes. तो एक टर्म आपके पास यूज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So if you want to calculate the refractive index, or in simple word you can say that the refraction value or refraction rate of that material, in simple words हम इसे define कर सकते हैं कि refractive index जो है वो refraction rate होता है. और वो refraction rate किसका होगा? Of a material, or just simply say that of a dense material. कि वो मटेरियल लाइट को कितना बेंड कर सकता है, ये उसका रिफ्रैक्शन रेट होगा. Yes. ठीक है. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला हम यूज करते हैं. वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? Yes. और वो फॉर्मूला ये होगा, सबसे पहले अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल लिखें, सो द सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉल एन. सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉल एन. और ये सिंपली हमारे पास एक रेशियो के इक्वल होगा. और वो रेशियो आपको क्या क्वांटिटी बताएगा? रेशियो आपको क्वांटिटी बताएगा यहाँ पर कि आपका रिफ्रैक्शन रेट कितना है. तो उसके लिए हमारे पास n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल
आपने वो एंगल मेजर करना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन रे इन एयर एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल लाइन और एयर की जो रे होगी आपके पास, उसमें आपने एंगल मेजर करना है, उसका साइन कैलकुलेट करना है। वो भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से कैलकुलेट होगा। और डिवाइडेड बाय आपके पास सेकंड टर्म कौन सी होगी? ये तो हमारे पास रियल मीडियम हो गया एक तरह से, ठीक है। साइन ऑफ एंगल यस बिटवीन एयर एंड नॉर्मल, तो जब नॉर्मल एयर से वो ट्रैवल करता हुआ आएगा, इसका मतलब है ये रेयर मीडियम में। और आप इसको डिवाइड करोगे साइन ऑफ एंगल, और वो एंगल किसका होगा? बिटवीन रे इन, अब कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे? ग्लास लेट्स सपोज अगर हम ग्लास यूज कर रहे हैं, वाटर भी डेंस मटेरियल है, लेकिन जो भी डेंस मटेरियल होगा आपके पास आप वो यूज करोगे, और उसका एंगल नॉर्मल के साथ, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये लिख सकते हो कि जो स्मॉल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इक्वल होगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है वो आपको ये लाइट वेव के थ्रू बता रहे हैं इन एयर, और जो सेकंड एंगल है वो आपको डेंस मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, राइट। यस So this is the formula to calculate the refractive index of any material, right? यस Or if you want to write a proper definition for this concept, so the definition is going to be like this, that refractive index is the ratio, it is the ratio between, or you can simply say that क्योंकि जब उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट होगी थोड़ा सा उसकी स्पीड पे डिफरेंस आएगा, राइट। यस Speed of a wave in two different regions, two different regions or mediums. तो अगर आप दोनों में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर लो, तो लाइट बेंड होने की वजह से आपके पास लाइट जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद आपको रिसीव, थोड़े से टाइम के बाद रिसीव होगी, राइट। और जहां पे लाइट बेंड नहीं यस होगी वहां पर आपको लाइट जल्दी रिसीव हो जाएगी, राइट। यस तो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं